Good noon, friends. So here I am with another gem on my list. She's Shailja Chandra. And something that connected us was a sheer coincidence. Like there have been many coincidences in my life that has enriched it in its substance. And here is one that I'm introducing you to. मुझे खर्ची में पूरा एक दिन रोज मिलता है मगर हर रोज कोई छीन लेता है झपट लेता है उसे मेरी आंटी से अभी ये कुछ खर्च करने के लिए लम्हे मैंने चुने किसी के खूबसूरत साथ के साथ और हमारी वो मेहमान हैं शैलजा चंद्रा जिन्हें मैं बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने कुछ लम्हों की शक्ल में कुछ ऐसा मुट्ठी में और अपनी अंटी में समेट लेने की कोशिश की है बांध लेने की कोशिश की है जो शायद असल में समयातीत है गुलजार नाम ही जैसे अपने आप में वादा है बहारों का जिन्हें खिजा का कोई डर नहीं मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मेरी दोस्त शैलजा चंद्रा से जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है गुलजार द मून स्मिथ वेलकम शैलजा टू मिडनाइट लाटे शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया माया तुम से मिलके मुझे और अभी तो फेस टू फेस देखकर भी बहुत खुशी हुई जैसा कि तुम्हारा नाम ही है यू केम लाइक माया सेरेंडिपिटी व्हिच इज ऑलवेज ब्यूटीफुल आई थिंक हमारे जो खर्ची के लम्हे होते हैं वो जब सेरेंडिपिटी के साथ कोलाइड करते हैं तो बहुत ही इनवैल्यूएबल लम्हे बन जाते हैं सो रियली रियली प्लीज टू हैव come in contact with you and really glad to be on your midnight latte show. Thank you so much. Thank you. The pleasure is all mine. Life happens, Shailja, in a full circle. No matter how wild goose chases you keep running throughout your life, you keep dreaming, you have ambitions that you nurse to the core of your heart, and you gather the bits and pieces of information that you mistake at times for knowledge. But at the end, it is us, the essence, the substance, with which we get introduced at an hour when we discover that it's too late to do that and the curtains are about to draw. And this is time to exit. तो मेरे ख्याल से गुलजार वो कड़ी वो बहुत खूबसूरत कड़ी जिसने हम दोनों को जोड़ा है उनकी शायरी में अपने आप में वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि शायद हम उस अंतिम पल पर पहुंचने से पहले एक्चुअली समझ सकें कि जिंदगी है क्या तो ये भी जान पाए कि मैं हूं कौन इससे पहले कि समय निकल जाए मैं ये जान पाऊं कि मैं कौन हूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी शैलजा बिकॉज यू हैव बीन सो क्लोज टू his philosophy of life and you have meticulously gathered information which I can say it was knowledge as well rich in context and you have brought out a wonderful book in itself so what is your conclusion who Shailja is first of all let me know who Shailja is Shailja is forever evolving that is for sure so मैं पल पल बदलती रहती हूँ कुछ भी कायम तो नहीं रहता तो मेटामॉर्फोसिस तो चलता ही जाता है एक तरह से मैं नहीं बता सकती क्योंकि बाय द टाइम मे बी इन 3 days टाइम पीपल वॉच इट आई वुड हैव मूव्ड ऑन टू अ न्यू होराइजन not the DNA still remains the same but I think I am someone who is very very open to change and to evolving and to learning new things and exploring things so उस हिसाब से मैं पल पल तो बदलती रहती हूँ जहाँ तक आपने कहा मुझे अच्छी लगी हुई ये बात क्योंकि अभी मैं कुछ वक्त पहले किसी से बात कर रही थी कि जिंदगी में हम लोग कई तरह के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से गुजरते रहते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हमारे हाथ कुछ कड़ी तो आई है समझने की किसी वाइज पर्सन को पढ़ के या कुछ सुन के या अपने एक्सपीरियंस से सीखते चलते हैं लेकिन जब उन सबको अप्लाई करने का कई बार वक्त आता है तो लगता है कि पूरा पर्दे के आसपास सिचुएशन ही बदल गई है सो अंतिम समय तक जाके आपको शायद सब कुछ क्लैरिटी आती हो तब तक इट माइट बी टू लेट बट ऐसा ना हो कि टू लेट ना हो और जो
कई लाइफ के जो सटल एस्पेक्ट्स हैं और जो पिलपिले लम्हे हैं उनको हम अनकवर करते चलें, उसके लिए मुझे लगता है हमें इस तरह की फिलॉसफी, जैसे कि गुलजार साहब के शब्दों में है, एज यू राइटली नोटिस, it's good for us to get exposed to that, because it just, I think, makes your perception of the world so nuanced once you have read Gulzar and virtuous writers such as Gulzar. Your perspective is, for sure it's going to get enriched and get nuanced. सो मेरे ख्याल से चलते चलते जो मैं पल पल बदलती रहती हूँ उसमें मुझे साथ देते हैं गुलजार साहब हर पल, और भी कई राइटर्स जिनको मैंने इस किताब में भी शामिल किया है, जैसा आपने हम्म। देखा था, जैसे हम्म। खलील जिब्रान भी आप भी पढ़ रही थी। तो लंबा हो गया शायद उत्तर, लेकिन हाँ, यही है कि मेरे पास कोई ऐसा सर्टेन आंसर तो नहीं है, कॉन्क्रीट शैलजा तो कुछ नहीं है, पानी की तरह हूँ शायद, चलती जा बिल्कुल। बहती आई जा थिंक रही। ये प्रवाह ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हम सबके व्यक्तित्व में अगर ये प्रवाह हो, तो बस लाइफ तो बह जाने का ही नाम है ना, कतरा कतरा करके। बिल्कुल। And one should actually be open to change, because if we don't change, we are static, we are not human beings, and mortal fabric as it is liable to change, and it has to keep evolving. इट हैज़ टू कीप इवॉल्विंग, एंड आई थिंक हम लोग अपनी कुछ आइडेंटिटीज के वेरिएबल्स में बहुत रिजिड होते चले जाते हैं, और कई बार Hmm. लगने लगता है कि हमारी पूरी आइडेंटिटी वही है, जो Hmm. could be your job, could be your occupation, your qualification, your family. But then there's so many, infinite dimensions of your personality that can only start to blossom once you are open to change and evolving. So Hmm. I'm a I big, think big, there big are layers and layers to it, and we keep knowing ourselves. And we should definitely give many chances to know ourselves bit by bit, layer by layer, day by day. बिल्कुल। And I think literature, poetry, whatever Hmm. we pursue with total passion. It could be any sort of art. It बिल्कुल। is not only on us to understand the art understands us more than we do ourselves. And this is how layers keep opening beautifully. No, beautifully said. That's what I also feel, that जितना मैंने इस किताब को या कोई भी क्रिएटिव पीस को जितना हम शेप करते हैं, उससे ज्यादा वो किताब हमें ने मुझे शेप शेप करती हैं, किया है। बिल्कुल, उस बिल्कुल। पोएट्री ने जो आपने लिखी होगी हम्म, शायद उसने हमें शेप किया है। सो या आई बिल्कुल। टोटली रेजोनेट विद यू देयर। हम्म। तो शैलजा, आपने अपना एक सपना जी लिया है, जो मेरे लिए अभी एक सपना है। आई एम नॉट एनवियस ऑफ यू। Are you talking बस about Blue देखना। Mountains? सॉरी। ब्लू माउंटेन्स की ट्रिप की बात तो नहीं कर रही है ना? हाँ, ब्लू माउंटेन्स की ट्रिप के बारे में आई डिड फील अ बिट jealous of you, because you had been among such wonderful sites for a day or two. I had been seeing your updates, 2 days, हाँ। and it was actually wonderful, and I was carried away by the scenic beauty that you found yourself in. बट या गुलजार से मिलने का देखना है कि अभी कितनी शिद्दत है मेरे सपने में, मेरी इस ख्वाहिश में, और क्या पता आप ही जरिया बनने वाले हो इस चीज का। दैट विल बी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सेरेंडिपिटी का जो एक पूरा सर्कल है वो फिर शायद पूरा हो जाएगा। फिर हो सकता है कोई माया काम कर जाए माया के लिए। Yeah, I'm into that. All तो the best. Because uh, कई बार तो लगता है कि जो सपना था, जो उनसे मिलने का, कई बार मिलने का, मुझे लगता है कि वो सपना है, रियल भी है, और कई बार इतना सपना जैसा लगता है कि अनरियल भी लगता है। सो आई थिंक हम मतलब हो लोग जाने के बाद भी सपने जैसा लगता है, होने से पहले भी सपने जैसा लगता था। हाउ बिल्कुल। ब्यूटीफुल। सो हम सब लोग सिमिलर ही, आई थिंक, ड्रीम लाइक स्टेट में हैं। बिल्कुल। एक ईश्वर है जिसे हमने ठीक से कभी देखा नहीं, समझा नहीं। जैसा कि गुलजार भी कहते हैं कि ख्याल ही जिसकी शक्ल है और ख्याल ही जिसका सबूत है। पर एक ईश्वर है शैलजा, जिसे मैंने अक्सर ठीक ऐसे ही स्टार्च सफेद कुर्तों में देखा है, तस्वीरों में देखा है, नाक पर चश्मा लगाए देखा है, किताबें लिखते हुए देखा है। बेहद ज़हीन, बेहद सरल और बेहद सादा व्यक्तित्व है जिनका। जिस तरह से वो भावों के ज्वार को पकड़ लेते हैं शब्दों में,
यहाँ तक कि उन्होंने अमरत्व को भी शब्दों में बुन डाला है। कितने ही लाइफ के पिल-पिले लम्हों को शक्लो-बू में ढाल दिया है। मेरे लिए वो भी अपने आप में किसी मसीहा, किसी गॉड से कम नहीं। So, let me know, how did you feel before you met him, and what was the experience when you did meet him? And can you find any comparison between the dream that you had about Shiva, who you saw as a playmate of yours? How far were you convinced whether it could actually be a thing in life, or it was too surreal to be achieved? So, let's talk about both the experiences, both the dreams, and what do you feel about that? Okay, yeah, there are a few layers to that question. So before I met him, it was, a long time fascination. I could say कि बचपन से ही almost, or at least teenage से तो था ही जो उनके गानों के साथ एक connection था. I must say कि I actually came across his one of his poetry books quite early in my life. लेकिन गानों का साथ हमेशा रहा. और यूनिवर्सिटी वगैरह के आने के बाद थोड़ा-सा आप हो ही जाते हो डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई और ये सब से। लेकिन व्हेन आई केम टू सिडनी एंड आई वाज़ डूइंग आई स्टिल डू अ रेडियो प्रोग्राम एवरी संडे। उसके ज़रिए से मुझे खुद को भी एक्सप्लोर करने का और इस सपने को और पैशन और शिद्दत शिद्दत के साथ देखने का मौका मिला। तो तब मैंने जैसे किताब में भी लिखा है कि मैंने अपने प्रोड्यूसर जो है रेडियो के उनसे कहा कि मैं मरूँगी नहीं जब तक गुलज़ार साहब से एक बार ना मिल लूँ। और मेरे ख़्याल से वो ही मेरी शिद्दत की लिमिट थी। मुझे लगता था कि अगर मुझे मुंबई जाने का कभी मौका मिला और किसी एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला तो आई न्यू एग्ज़ैक्टली देयर आर not many things that I'm so certain about in my life, I must admit, but this one thing I just knew who I wanted to meet. और जिस तरह से वो बात धीरे-धीरे सच हुई और जिस तरह से वो मैनिफेस्ट किया शायद मैंने ही वो सपना देखकर, वो एक बहुत लंबी कहानी है जो कि शायद किसी और एक अलग कन्वर्सेशन के लिए रखेंगे। But the day I met him was 22nd November 2012. और मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ भी प्रेसिडेंस नहीं था कि हाउ टू फील व्हाट एम आई गोइंग टू फील व्हेन आई सॉर्ट ऑफ नॉट सी हिम but I was just flowing with it, and I just remember feeling this, excitement just in a form of a deep knot in my tummy. And when I saw him, I think when you earlier mentioned, कि एक ईश्वर है, I must say that when I was taken to his library, I thought that I was entering into this temple, which a temple that was in real sense a temple, his library. And when I saw him, he was still sitting on his table and doing something, and that probably was a vision of divinity, without doubt. So I did experience that godliness in that moment, and that has always stayed with me. I also mentioned to him when I touched his feet, that was the first thing, and I said to him that this is what I said to Vikram Sharma, who is my producer of the radio program, that मैं मरूंगी नहीं जब तक आपसे एक बार ना मिलूं. So his first words to me were, "अब तो आपको जीना पड़ेगा," he said. So you're right, actually, in your analysis that it was truly an experience of divinity. And then that divinity, and his noor has stayed with me through all, his words, his poetry, or other interaction that I've had with him. So that I'm truly privileged to have had his noor in my life and his mentorship in my life. So that's the first part, and then you asking about the my connection with Shiva, and so just explain to me what was the question again. I just wanted to ask you to tell the audience about your dream about Shiva as a playmate to you. That again must have been a moment of divinity to you. And Yes. how do you compare the two experiences? What was your perfect moment? Mm.
आई थिंक जो पहला था उस समय मैं बहुत छोटी थी। ये बहुत Mhm. मैंने शायद ऐज का मुझे एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं है, बट ये बहुत छोटेपन की बात है, जबकि देयर इज़ नो स्केप्टिसिज़्म और देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट द प्रेज़ेंस ऑफ गॉड। आई Mhm. वाज़ brought up to be, a very, very a Shiva devotee. In fact, my name actually has a strong connection with Shiva. Shailja actually means Parvati. Okay. यस, सो वो मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ या डिवोशन का मैनिफेस्टेशन था उस सपने में। जबकि मेरी उम्र खेलने की थी, तो फिर शिवा भी मेरे खेलने के ही साथी बन गए उसमें। So और beautiful. और हाथ में हम दोनों के थी एक टूटी सी पतंग सी थी, तो वो बड़े ही तन्मयता से उसको फिक्स कर रहे हैं। ही इज मेंडिंग दैट काइट, दैट्स Okay. व्हाट ड्रीम वाज। बट ये बात सच है कि उस सपने के बाद मुझे हमेशा लगता था बहुत टाइम तक कि मैं कुछ हो ना हो मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सपना आया, तो मुझे लगता था कि दिस होल वर्ल्ड एक्चुअली इज अराउंड मी समहाउ। आई वाज राइट इन द मिडल ऑफ द स्टेज ऑफ दिस अमेजिंग वर्ल्ड। वो बहुत वक्त तक मेरे साथ रहा, और ऐसा नहीं कहूंगी कि अब मैं बहुत अलग हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि life, I wasn't special. Life will throw its curves at you, Challenges to you as well. Yeah. yeah, you realize that the concept of God in your life and His presence or her presence will transform into some other energy, some other force, and Hmm. in different ways. So that has happened with time. दोनों को मैंने एक्चुअली कभी साथ या रिलेट भी नहीं किया, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कनेक्शन इन माय माइंड ऑफ द टू एक्सपीरियंसेस। मेरे ख्याल से ये सो चीजें इतनी सूक्ष्म है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती हैं, बिकॉज व्हेन यू से that you were still a schoolgoer at the time and you couldn't have remembered it so vividly, but you did. It somehow get imprinted on the canvas of your memory. So it it was did, actually that rubbery textured pilpila lamha that has uh, stayed with you till date. And I can means strike a connection between the two. एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से दूसरी बात यहाँ पे ये भी थी कि जब मैं गुलजार साहब की खुदा के बारे में जो भी पढ़ रही थी, तो उनका जो कॉन्वर्सेशनल एक बड़ा कैंडिड कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है, उनका बड़े थॉट्स बात करने का मियाँ. बड़े मियाँ से, तो हम्म. उससे भी मुझे वो मेमोरीज ट्रिगर हुई, क्योंकि मेरा भी कनेक्शन वैसा ही था ना, कॉन्वर्सेशनल। वी आर जस्ट टू प्लेमेट्स प्लेइंग ऑन अ सनी आफ्टरनून। True. सो सो वॉइस में मुझे कहीं ना कहीं अपना ही कनेक्शन रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा था। It दैट्स looks like when you read Gulzar, you feel like there is some spring falling from the mountains, the blue mountains, and it just bursts forth with the entire vigorous manner. And the emotions that are evoked in us as a reader, they are so raw. It feels like blood from open wound. There are certain words that go direct to your heart, to your mind, and they like strike your sensibilities in a way that you could not express in words. At times, when I'm reading him, there are certain lines that make me go weak in knees, most vulnerable, and that vulnerability at that moment is so beautiful. I feel that aura of God around me in those lines, and it feels like the world has seen you naked. This is how I feel when I go through his poetry. आई रिमेम्बर यू ऑल्सो मार्क्ड अ लिटिल पोएट्री जिसपे वो मैं अपनी नज़्मों के अंदर नंगा बैठा हूँ, वेयर ही सेज दैट, एंड आई Yeah, थिंक यू स्पॉट ऑन विद what you said about his choice of words, or his choice of you know the fact that he's very, very transparent. So the way he comes across, he's with lot of raw verve, he's sharing his vulnerabilities, his own despairs, and his own sort of sides, melancholy. uh, so when there is that part being shared, you could feel ki it is so private. It's a very, very personal reflection true, of true. an intimate moment. How am I relating with it so much?
But this is the Hmm. paradox, which is Hmm. so beautiful. And I Hmm. talk about that paradox as well. Ki the more vulnerable and intimate you are with the sharing, the more Hmm. universal it would be. And it's a Yeah. beautiful paradox, you know. So you need not build that facade around you of beautiful words and the things that are artificial, because that won't be connecting you to the people around. Exactly, exactly. And even if your voice is more about, relating, or a voice of an oracle where you're trying to speak from a mighty tower, even that may not connect. It may get No. some Hmm. followers, but it may not, hit you like the way you describe. So Let me that is share a personal experience that when I go to temples, there are certain temples which are so beautiful and full of splendor and everything. And I just am standing at means right in front of the shrine and I don't feel the connection that I should feel. But yes, there are other times when I'm reading something, when I listen to some music, I right. feel that connection all of a sudden. True, true. Yeah, so those moments are, uh, of course, random as well, but there is, Hmm. some science behind it, in the sense कि इस किताब में कुछ हद तक मैं उसके जड़ तक भी जाना चाह रही थी कि क्या Hmm. है वो बात जिसकी वजह से what you said and what I feel and why we're feeling this way and why we get so persuaded and so drawn into his words, so Hmm. उस फिनोमेना के पीछे मैं घुसना चाहती थी और वो मेरे ख्याल से एक किताब में मैंने शेयर भी किया है, उसका नाम मैंने द मोनालिसा फिनोमेना के नाम पे Yeah, डाला है। we'll लेकिन discuss that. Yeah. हाँ, लेकिन पूरे ही आई थिंक सारे 9 चैप्टर्स में ही ये बात खुद को साबित करती जाती है। द फैक्ट दैट ही इज़ सो इंटिमेट विद हिज शेयरिंग, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इट इज़ सो यूनिवर्सल एंड सो रिलेटेबल। I think this is the reason why Gulzar Saab has himself said, I have passed through the surgery a number of times. Mostly it has been skin deep only. And this is for the first time, it's an open heart surgery. And Shailja is the surgeon. Because you do probe it with that penetration, that depth, that insight, that it comes out beautiful and as palpable as it actually is. Hopefully, hopefully uh, I have been, honest to what I was feeling, with the Yeah. hope that this will resonate with more people. So yeah, that's the hope. So, Shailja, tell us what is about your radio journey. Where did it actually start? And Oh, what does it actually take to be a radio presenter? so I have, again, मैं पल-पल बदलती तो रहती हूँ, but I of course never thought I would be a radio broadcaster. That happened by accident, and Mm-hmm. and I have grown with it. I have grown as a radio broadcaster with it, and I've also grown as a person with it. But it all started with a random uh, मुलाकात with the producer of the show, Vikram Sharma उनका नाम है, and Okay. बातों-बातों में ही इज़ अ स्टोरी टेलर, तो वो अपनी बता रहे थे कि आई न्यू दैट ही डज़ अ रेडियो प्रोग्राम, तो बात हो रही थी, तो ही सेड कि हमारे स्टूडियो में Mm-hmm. घोस्ट्स हैं। ही सेड एक्चुअली हमारा जो स्टूडियो है वो पेडिंगटन, एक बहुत खूबसूरत सबर्ब है सिडनी का, और उसके टाउन हॉल में हमारा स्टूडियो है। Okay. ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग, एंड if he says कि इसमें घोस्ट हैं, तो there can be many stories that can connect with that. ऊपर लाइब्रेरी है हमारी, पेरिंगटन लाइब्रेरी। सो आई सेड, क्या फालतू की बात है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। ही सेड, अच्छा कल आप आइए स्टूडियो में, दिस वाज सैटरडे, सो संडे को आप आ जाओ, मैं स्टूडियो में होऊंगा, देन यू कैन एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। I don't know Okay. why I said, okay, I'll do it. Generally, I would run, in the opposite direction if there is a mention of any, supernatural. But somehow I Here said, again, okay. we can relate. Here again, I can relate to you because मेरी भी स्थिति यही हो जाती है जब कुछ भी कुछ हॉरिबल बच्चे देख रहे होते हैं कुछ भी ऐसा मतलब इवन द मेंशन ऑफ अ थिंग would Horror give me movie. creeps and I would just silently run away from the scene कि इससे पहले कि किसी को पता चले कि it is my raw nerve and they can exploit it I silently withdraw from the scene. Right. So for some reason
I just rocked up to the studio, and that was my first day there. I just took a little playlist with me, and that really resonated with our listeners. I got a number of calls saying that, oh, I've heard that song after so long, this and that. So that's Okay. how that started, and then uske baad, yeah, I started to do it every Sunday. But with time, as I said, that it's also, it's not really just about कि मुझे वहाँ पे जाके कुछ ऐसा कहना है या वैसा करना है. It has been an experience of knowing myself as well, and just sanity, or sort of a self reflection, moments for self reflection, because I'm generally, mostly, I hope, my authenticity is my only, I would say, weapon, or a positive thing that I can hook on to. और रेडियो पर भी मैं कभी भी वो नहीं हो सकती जो मैं नहीं हूँ. तो with time, I have uncovered many layers of my, own layers, my personality, because I have to be authentic. So I have to know what it is that I have to say and I have to talk about. So it's been a beautiful journey of 10 plus years of, forming some really amazing connections with our audience, like a little community radio family that we have, but all purely accidental. So yeah, it's called Voice of India, by the way. If there are people in Sydney who don't know about it, listening 89.7 FM every Sunday, 10 a.m. That's what I do. Okay. That's beautiful. What lies behind the title of the book, The Moonsmith Gulzar? Are there any prominent themes running beneath this Tana Bana of the book? Prominent themes. So there are, of course, the nine themes, which the Tanavana is Gulzar, and his writings on nine existential themes. The Moonsmith, it's quite interesting that, um, of course, everybody who follows Gulzar Saab knows that Chand, the moon, is his very, very favorite muse, and you'll see the him coming back to the moon in so many shapes and forms. So the word moonsmith is someone who really creates, molds, shapes the moon in different shapes and forms. तो वो मून स्मिथ का रेफरेंस है, और वो शब्द एक्चुअली गुलजार साहब का ही दिया हुआ Oh, है. हाँ. सो मैंने उनसे हाथ जोड़ के वो ले लिया टाइटल कि मैं अपनी किताब. that's fantastic. तो Hmm. ऐसा नहीं है कि किताब में एक चैप्टर उनके मून के इमेजरी पे डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है. सो अगर डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. सो अंदर चांद पे चैप्टर नहीं है, लेकिन द मून स्मिथ is a lovely title for the man that the book is about. So that's the connection. लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि um, कि जो 9 chapters हैं, I think at this point, if I may very quickly mention what the 9 themes are in the book. So Yeah. we started to talk about Khuda. So Gulzar's conversations with erratic Khuda, that's the first chapter. Gulzar on love, Noor Ki Hmm. Bond. Gulzar on relationships. So I call Gulzar the Julaha of the libas of relationships. Gulzar on the aina of truth and reality. Then the next chapter is the Mona Lisa effect in Gulzar's writings on soil and society. Gulzar on time, Waqt ki Mauj. Then we have a chapter which is exploring Sukshma Tarange and poetic synesthesia. We had a little chat about that on WhatsApp. Nazmo Ke Tanke, which is the next one, which is Gulzar's insights on the creative process. And the last one is Maut Munsif Hai, which is Gulzar on the nature of death. So those are the 9 themes of the book. Yeah. As you talked about authenticity that you would love to preserve at any given moment, and that is what is the key to your evolvement as a person, as an artist, and you keep trying new things, being authentic and earnest in the pursuit of it. So, this Exactly. is what you describe as the significance of the insignificant things, right?
And this is Yes, what yes. Gulzar also describes so beautifully when he says, कितना छोटा है मेरा कद, फर्श पर जैसे किसी हर्फ से एक नुक्ता गिरा हो, बेबेमानी सा भटका हुआ एक पल हूं, मैं काल से न टूटता हूं न जुड़ता हूं। जर्रा बनने के लिए कितनी सदियां लग जाती हैं, जो सूरज को देखकर चमकता है। पत्थर Mhm. बड़ा नहीं है, वो जर्रा बड़ा है जो सूरज में चमकता है। दिस इज सो एक्सक्विजिट अ फील So टू beautiful. hmm. So So I beautiful. think And we should bilkul, the significance in the insignificance. I think this is beautifully summarized in those lines कि पत्थर नहीं है बड़ा वो जर्रा जो इतनी ही सदियों से कितना ही इवॉल्व होके वहां पहुंचा है कि सूरज में चमक बिल्कुल सूरज हम्म वो जो इंसिस्टेंटली जल रहा है कब से सदियों से लेकिन वो जर्रा का भी अपना सिग्निफिकेंस है ना जो इवॉल्व होके उस इसलिए सूरज क्योंकि हाँ को क्योंकि पत्थर तो अपने आप में अभी भी अपनी एक शक्ल में है, लेकिन जर्रा तो पता नहीं किस किस चीज से गुजर के जर्रा बना है। So बिल्कुल this is who we are, who have been evolving under the pressure of the moment, the circumstantial pressures, and this is how we become more precious. मोर So we प्रेशियस should और definitely welcome, yeah, this littleness of humanity, which externally it seems to be like we are insignificant, we are just a drop in the ocean. But I think this is the drops themselves that make the ocean. बिल्कुल एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ एंड इन अनदर चैप्टर वी टॉक अबाउट आदमी बुलबुला है पानी का जो है आई Hmm. थिंक वक्त वाले चैप्टर में है तो उसमें वो इसी Hmm. को ही एक तरह से एक और इमेजरी दे रहे हैं कि जो Hmm. हमारा डूबने के बाद उभर के फिर तैरने की जो एक हमारी परपेचुअल स्किल है या जो स्ट्रेंथ है वो देखा जाए तो बुलबुला ही हम लेकिन उस बिल्कुल बुलबुले होने की वजह से ही हम तैरते रहेंगे हमेशा वक्त की मौज पर मेरे ख्याल से वो इतना एम्पावरिंग है इट्स सो बहुत ब्यूटीफुल सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। Uh, Gulzar has talked a lot about love, is talked at length about it. And there has been some deep meaning when we talk about the absolute surrender that he mentions. And then जी there are some beautiful hyperboles as well, where he says, कितनी देर लगा दी तुमने आने में और अब मिलकर किस दुनियादारी की सोच रही हो, किस मजहब और जात पात की फिक्र लगी है, आओ चलें अब 3 ही बिलियन बरस बचे हैं। And the reader, knowing that this is Gulzar and he can go to the any depth of emotion and uh, he can actually press that pilpila lamha and express it the most beautiful way, lay it threadbare. So the reader feels intrigued by imagery like this, and it beautifully reminded me of Christopher Marlowe to his coy mistress. If you have read that poem, नो टेल मी had we but world enough and time, this coyness, lady, would not be a crime. Because the mistress is very coy and she wants more time to come close to him, to open up to him. And he tells her that he needs, in a very hyperbolic manner, then I need at least 10,000 days to appreciate your beauty, your eyes, and your skin, and your complexion, and this and that, your pearl white teeth, and we don't have that much time. There are just a couple of millions of years left. So why this coyness? So I could strike that comparison between the two. वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो मेरे प्यार की बात हो रही है, गुलजार साहब का लिखा हुआ एक निहायती खूबसूरत जो गाना है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। nice one. And I do refer to actually that song in a number of chapters. And I must mention कि ये जो किताब है ये primarily गुलजार साहब की literary works पे है focused and that's हम्म, it's one of its uniqueness as well. लेकिन एक ये गाना जो आपने मेंशन किया है ये भी piece of literature ही है बिल्कुल बिल्कुल। सब कहते हैं कि Whatever he has penned carries an entire philosophy of life within. बिल्कुल एंड उसकी जो एस्थेटिक्स है और उसकी जो सेंसिबिलिटीज हैं वो लिटरेरी वर्क की तरह ही हैं तो इसलिए मुझे बिल्कुल। वो रेफर तो करना ही पड़ा वो गाना चलिए
और आप भी साथ में गुनगुनाइएगा मेरे, Sure, ठीक है? sure. हुँ। आ, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, हो और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट। कानों में एक बार पहन के लौट आई थी, हो पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो वो शाख शाद गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाद गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे सुख आधे आधे भीग रहे थे। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब भिजवा भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो सो जाऊंगी। That's such a beautiful number. And I can see some beautiful comments as well. And many of the people would definitely be able to relate to this because it has been their favorite song, just like it happens to be ours. Yeah, absolutely. Thanks. That Uh, was a request that I really appreciated. Shelja, you talked about Mona Lisa effect in the book, and you mentioned it just a moment ago. So let us please understand what it is. Oh, yeah. I think it'll be a difficult task trying to explain, but I'll try it. I think where you talk So the about being an active participant to this panorama of life rather than being a passive spectator. Is it so something like that? how does he?
yeah, it's about how does he make you an active participant. And I feel that there's so much, most of his writing, but particularly the writing on the soil and society, about, where he talks about his own hopes and despairs, उसमें वो बात कर रहे होते हैं बहुत ही इंटीमेटली अपने बारे में, कि मैं अखबार के पन्नों पर खुद को जो तलाश कर रहे हैं, आप उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, पर somehow that he becomes you. You don't realize when you have actually, rather than being the onlooker, you have become the one who's you know being watched in a way. So मोनालिसा इफेक्ट में मैंने यही कहा है कि जैसे मोनालिसा को जब आप देखें तो उनकी आईज आपको फॉलो करती हैं. सो दैट्स, आई थॉट दैट वुड बी a good phenomena, or relevant sort of way to say how his words are watching you, not the other way around. You are not reading his words are watching you. वाह. um, एंड थोड़ा पीछे जाते हुए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कि his ability to share his own vulnerabilities in a very very हम्म. intimate manner is what हम्म. making that connection, that relatability, कि आपको लगता है ये हो ना हो, ये तो मेरी ही कहानी है, although intimate बिल्कुल. हम्म. ही है, पर ये यूनिवर्सली मेरी है. तो वो एक बड़ा इंट्रीगिंग पैराडॉक्स था जिसके बारे में मैंने लिखा, और उसको इस फिनोमेना के तरीके से मैंने कोशिश की है बताने की, और इस फिनोमेना को थोड़ा सा और एनालाइज किया है किताब में, विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, कि मैंने 3 या 4 पॉइंट्स में जैसे मैं उसके एसेंस में घुसने की कोशिश करी है, कि हम्म. मोनालिसा इफेक्ट कैसे पॉसिबल है और क्यों हम्म. पॉसिबल है उनके शब्दों हम्म. में. तो एक तो यही बात हो गई, द वे ही शेयर्स हिज वल्नरेबिलिटी, बट देन आई हैव एनालाइज्ड 3 or 4 more points to further sort of unlayer this phenomena. So that's the Mona Lisa phenomena. Wow, you have found this beautiful metaphor, and it does make the things clearer enough. वक्त के बारे में गुलजार का क्या कहना है? वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है. बिल्कुल, और वक़्त मेरे ख़्याल से हम सबको ही इंट्रिग करता है ना, हर सेंस में. आप बहुत ही मैं फ़ेसबुक या बहुत ही कुछ पेडेस्ट्रियन कमेंट्स पे भी जाओ तो लोग कहते हैं ना, हाउ टाइम फ्लाइज़, एंड आई ऑलवेज़ वंडर अबाउट इट, कि एक्चुअली टाइम इज़ नॉट फ्लाइंग एनीवेयर. इट्स एक्चुअली shaping us in every moment. It's transforming us in every moment. So these are moments that have transformed from a state to another state, and somehow उसके पीछे भी पैराडॉक्स ये है कि टाइम दिखता तो नहीं है, लेकिन जमा होता जाता है. और उसके बिल्कुल. बारे में गुलजार साहब ने बात की है, और वो जो कविता है जिसमें मैंने वो जमा होने वाला रेफरेंस लिया है, वो एक्चुअली हम्म. उन्होंने बॉस्की के बारे में लिखी थी, कि हाउ शी इज ग्रोन, और अब कैसे बढ़ती जा रही है, कि टाइम को तो मैंने जी. गुजरते हुए देखा नहीं, लेकिन जमा होते हुए देखा है, हम्म. क्योंकि बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है. तो it's not flying, it's getting collected somewhere somehow. या. and या. and that's that's quite an interesting observation as usual. But what I notice, that when Gulzar Saab writes about time, I feel that he's enchanted by its paradox, कि टाइम दिखता भी नहीं है, लेकिन सदियों से बहता भी आ रहा है. सो ही एक्नॉलेजेस दोज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ इट. हम्म. साथ हम्म. में ही वो ये भी एस्पेक्ट मेंशन करते हैं कि काल मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि पिलपिले हम्म. लम्हे हमारी आजादी का की चाबी हैं. बिल्कुल. हम लोग लम्हों को तोड़ तोड़ के जीना सीख लेते हैं, तो हम काल से बंधे हुए नहीं रहते फिर ना. ये सर काल हमारी गर्दन पे बैठा हुआ है, हमें मोमेंट बाय मोमेंट तोड़ रहा है, बट इट्स तोड़ अप रहा टू है. अस हाउ वी एक्चुअली सी इट. इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन. If you can start living lamhe in pilpile form, then you are free of the kal. But at the same time, he also talks about that kal जो कि हमारी गर्दन पे बैठा है और तोड़ रहा है. So वो दोनों ही shades आपको दिखते हैं, और मेरे ख्याल से I wanted to bring out all those contrasting viewpoints, जो कि जैसे मैंने कहा है कि he's in one moment he's talking about with the time with tenderness of a poet. Then हम्म.
as a philosopher, and then also as a pragmatist, you know. So all those three voices merge हम्म very, very beautifully in his, you know, in his reflections on time. ये But of बहुत course, खूबसूरत एक दो लाइंस थी यहाँ पे। ये वक्त का थान, uh, थान जो कपड़े का बहुत बड़ा सा होता है, ये वक्त का खुलता थान खुलता रहता है पल ब पल, और लोग पोशाकें काट कर अपने अपने अंदाज से पहनते हैं वक्त। हाउ ब्यूटीफुली सेड, हु कुड हैव सेड इट बट हिम। beautiful imagery, and these are the या metaphors that, you know, literally you can just, you know, spend days thinking about that. Ki how amazingly he's made things easy for us to हम्म communicate with. You know, if हम्म we wanted to talk about waqt and how वक्त के अंदाज बदलते रहते हैं with time. You know, the horizon keeps evolving. How beautiful! So we could just in two line explain it. You know, without going अगेन into इट टॉक्स अबाउट या structure. प्लान, जिसको कि हम अपनी मर्जी से अपनी पोशाक बना रहे हैं, यानी कि समय तो हम सबके पास है। डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी यूटिलाइज इट, हाउ वी ब्रेक इट इनटू बिट्स एंड पीसेस, एंड हाउ दोस बिट्स एंड पीसेस कुड बी यूज्ड टू मेक आवर लाइव्स मोर मीनिंगफुल। And also with time, you know, with every era, the style of Poshak will change as well. So he's also या reflecting on how fashion keeps changing and how वक्त के साथ, you know, styles keep changing हम्म as well. So उसके साथ चलना भी उन्होंने बहुत इंटरव्यूज में, बहुत पोइट्री में ये मेंशन किया है कि how you have to keep up with time. और खुद का वो एक्सपीरियंस कहते हैं कि मैं वक्त के साथ चलता रहता हूँ, कि मैं, यू नो, फेसबुक के ज़माने में मैं डाकिया डाक लाया नहीं लिख सकता, मुझे पता है ये। And then तो again, you told me something when we were about to enter the interview. You just told me about the first copy of your book that reached him, and you हाँ, told him that this is, yeah. And the moment he had that copy, and he informed you that he had it, and he told you कि अब मुझे अपना past बना दो आज से। हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि उस दिन हम कहीं से ड्राइव करके आ रहे थे और रास्ते में बात चल रही थी कि व्हाट नेक्स्ट, यू नो, बिकॉज़ किताब एक मुकाम पे है और अब क्या करना है। एंड आई वाज़ reflecting on how, you know, my umbilical cord is always attached with him. I can never imagine, you know, um, writing anything about anything apart from Gulzar साहब। तो ये सब बातें चल रही थी as his phone rang, and I'm thinking when he said that कि, you know, beta, you know, you now move on as a writer, हम्म and I was thinking that he's actually, you know, thinking about the same things as me. He's actually, you know, with me sharing that journey where I am right now, and it just made me really emotional that he was, you know, he was reflecting upon my journey, you know, sitting हम्म thousands of miles away. He's thinking, okay, where is Shailja headed now? But he so beautifully he said, "Ki, you know, make me your past now and write, you know, explore new horizon." That's what he meant. But I said to him, I said, "Sir, my umbilical cord will always remain attached with you." So beautiful. That's so beautiful what he said, and that's so beautiful what you responded in. शैलजा, आपने बात की सूक्ष्म तरंगों की। सूक्ष्म तरंगे क्या हैं? भावनाओं की तरलता क्या है? आप पहले हमें ये समझाएं, then I'll recite a few lines from the book. और इंटरेस्टिंगली आपने देखा ही होगा कि सूक्ष्म तरंगे और भावनाओं की तरलता दोनों ही जो मेटाफोर्स हैं वो मैंने अमृता प्रीतम से बोरो कर लिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इसको कैसे लिखूं। एक्सपीरियंस हम्म कर रही थी। एक्सपीरियंस हम्म हमेशा होता है कि तेरी आवाज की बौछार में भीगा नहीं हूं मैं, यू नो, कब से भीगा नहीं हूं मैं। वी कैन ऑल हम्म फील दैट बौछार, वी कैन फील आवाज की बौछार, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको मैं क्या बोलूँ। ये हम्म चैप्टर इज़ क्वाइट क्लोज टू माय हार्ट एज़ वेल, सूक्ष्म तरंगी एंड पोएटिक सिनेस्थेसिया, because this is a very, very quintessential element of Gulzar. You know, this you know, interchangeability of senses and that. But just for the ease of everything, I just remembered कि अमृता प्रीतम ने उनके बारे में कहीं कुछ लिखा था, and I thought, हाँ, होना हो उन्होंने इसकी ही बात की है। She did know that. Yeah. Yeah, so you know,
And I think that there's that emptying your mind just before you start creating. And मुझे लगता है जब तक वो emptying of mind नहीं है तो वो जो gradient है for the poetry to flow, to be तरल, वो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस पूरे चैप्टर में मैंने वो एग्जांपल्स लेके आई हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि he has, you know, unlearned what he has learned so far, Learn. and he's not seeing the senses in the traditional way. You know, so he can just look at everything as though he's just been born, you know, afresh. You know, he's just a newborn baby, just exploring his world, and he can, you know, hear पैरों की चाप. Sorry, he can, you know, feel पैरों Yeah, की I'll चाप. come back to those lines. Yes. हाँ, तो टू कट द लॉन्ग आंसर शॉर्ट, मुझे नहीं पता तो मैंने अमृता प्रीतम जी क्या मेटाफोर्स ले लिए थे टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना. I think in order to strike this beautiful relationship with the readers, the audience that he has, and many others have, as he himself talks about Mirza Ghalib and he talks about Shakespeare, because this is the feel that we have when we read them. Oh my God, centuries ago, he felt the same thing and he could actually clothe what I feel today. So Yes, this is what it is. I think writing with that transparency and reading with being transparent enough as a reader that the things flow between you, that bhavnao ki taralta, it keeps flowing from one bosom to the other. And this is how it happens. The relationship, the beauty, the bond, right? ब्यूटीफुली सेड. Uh, हाँ. जो मतलब कोई सोच नहीं सकता है अभी हम हमारे पास जॉन कीट्स हैं हमारे पास पीबी शेले हैं who have talked about sensuous imagery and they have beautifully laid it threadbare in their poetry but there is something unique with Gulzar that he assigns one sense the job other than it is assigned to be, right? राइट. It is supposed to be doing. Like पीछे पीछे आती तेरी दो आंखों की चाप सुनाई देती है, आंखों की चाप, yeah, that's what I. आंखों की चाप, तन पे लगती हैं चिपकती आंखें, बर्फ सी ठंडी सुलगती आंखें, तेरी आवाज की एक बूंद, जैसा कि आपने कहा, हाँ. बौछार, स्माइल, तेरी आवाज की एक बूंद जो मिल जाए कहीं, या फिर तुम्हारे हाथ क्यों इस कदर खामोश रहते हैं. Who could have thought of it? Because So, yeah. yeah, So I can't explain how am I feeling reading these lines to you. And actually, you have skimmed the milk for us, this cream for us, and we are just again overcome with this ecstasy. We are not able to express it. कान पर धीमे से रख दूंगा आवाज के दो होंठ, आंखों को भी एक चुप सी लग जाती है, उंगलियों से छूता हूं तेरी खामोशी तब, ब्रेल में लिखी तेरी बातें पढ़ता हूं, तेरी आवाज को कागज पे रख के मैंने चाहा था कि पिन कर लूं, पिन कर लूं. मैंने मुंदरों की तरह कानों में तेरी आवाज पहन रखी है, खुशबू के रंग हैं तो बता मेहंदी पहनूं या महुआ. Means the sheer ecstasy that we experience while going through these lines, and I means gather these lines to recite because I want people who are pragmatic enough and they are koso dur with this poetry thing, they should actually realize this liquidity of emotion and how it actually makes you human. एब्सोल्युटली. एंड ये इन मोमेंट से गुजरते हुए हम अपने पिलपिले लम्हों का कोशंट बढ़ाते चल रहे हैं, राइट? जिंदगी में जो ड्राई मोमेंट्स हैं, द मंडेन मोमेंट्स, वो तो Hmm. बिना चाहे भी आते ही जाएंगे. इट्स अप टू अस, यू Hmm. नो, हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर सॉर्ट ऑफ एबिलिटी Yeah. टू लिव दिस पिलपिले लम्हा. और ये एक तरीका है कि इस तरह की पोइट्री को अगर लिख के नहीं तो पढ़ के ही सही हम लोग उस पिलपिलेपन को टच तो कर सकते हैं. और इसमें Hmm. भी एक फिनोमेना की मैंने बात की है जो है सिनेस्थेसिया, Hmm. पोएटिक सिनेस्थेसिया कॉल्ड इट. एंड Hmm. सिनेस्थेसिया है, अगर उसके बारे में पढ़ा जाए तो इट्स अ न्यूरो sort of a phenomena where, you know, most infants, they say, newly borns actually have this until the age of 3 months, if I remember correctly.
जब तक कि वो सेंसेस को इंटरचेंजेबली एक्सपीरियंस करते हैं। हम हम्म। सब ही शायद सिनेस्थेटिक थे until the we start to become conditioned with the way our parents behave in front of us, and slowly of course with age तो फिर हम बहुत ही सोसाइटी हमें कंडीशन कर ही देती है, लेकिन we are born to be synesthetic. This is a theory that a researcher has proposed, which is what I have referred to in my book as well. But to remain a synesthetic in their poetic life is quite a feat, and I must say that Gulzar Saab does it so beautifully and so incredibly, intriguing. And that chapter really, really, I have, as you said, Milk. I've tried to present those one-liners where you can get a full sense of how he interchanges and fuses the senses into each other. Meena has written that it actually gave me goosebumps. I think that's the exact feeling. We do have goosebumps. हमारे रेशे रेशे खड़े हो जाते हैं जब हम इस तरह की बात सुनते हैं कि इतनी सूक्ष्म भावना को भी शब्दों में बयां किया जा सकता है, और वो बिल्कुल। भी इमेजेस और मेटाफर्स कहाँ से उठा के जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि ये अभी मैंने लाइन पढ़ी थी कि तेरी यादों के बूंदे मैंने कानों में पहने हुए हैं, या तुम्हारे हाथ खामोश हैं। हाँ, This beautiful. Yeah, it's beautiful. We are not equipped with such beautiful imagery that we could appreciate this by, but let's just वो जो गूंगा गुड़ खाता है ना, वो वाली फीलिंग है ये, कि गुड़ खा रहा है, वो उस मिठास को अपने जहन में अंदर तक महसूस कर पा रहा है, लेकिन उसके पास जुबान नहीं है कि वो उसको बता पाए, उस मिठास को अभिव्यक्त कर पाए। I struggled, a lot कि कैसे इसको बोलूं. Before the book came I along, understand. I was writing, and I think that's why I thoroughly enjoyed writing the book, Hmm. because more than for anybody else, it was for me कि I was able to say it the way I'm feeling it. Hmm. वो relatable हो जाए औरों के लिए, रीडर्स के लिए, वो तो मेरे ख्याल बस, से हाँ, होने को वही सुहागा शर्त है, वही शर्त है, हाँ, है। कि दिल तक पहुंचा जाए किसी के अपने शब्दों के जरिए। बिल्कुल। तो जितना ये आसान लगता है पढ़ने में और हम वाह वाह कर उठते हैं, मेरे ख्याल से ये लिखने में उतना आसान नहीं है, क्योंकि कच्ची जो शक्ल होती है नज्मों की, उनको और मांझना होता है बहुत ज्यादा, और उस लेवल तक लाना होता है कि वो अपनी सादगी में भी अपने आप में बहुत स्पेशल हो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इसमें एक चैप्टर है शायद वो माँजना और कच्चे का रेफ़रेंस आपने वहाँ हाँ, से इसीलिए मैंने वो लिया बात कही। है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मेरे ख्याल से देयर इज़ सो मच पैक्ड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, एंड it's something that I have picked up from a number of sources कि 4 वो कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं जो कि गुलज़ार साहब की क्रिएटिव प्रोसेस को कुछ हद तक हमें एक वेंटेज पॉइंट दे पाते हैं टू लुक एट हाउ ही क्रिएट्स इट। जैसे आपने कहा कि हमने वाह-वाह तो कर लिया, लेकिन उसको लिखना इतना आसान नहीं है। तो जैसे गुलज़ार साहब ने लिखा है कि मरने से पहले कोई न दैट्स नहीं एग्जैक्टली वेयर आई वाज गोइंग टू। हाँ, तो मरने के बाद ही करता हूँ मैं हर नज़्म हमेशा। तो वो मरना हर कविता से पहले कितने लोग करना कर को पाते सोचते होंगे, हैं, हाँ। और फिर कितने लोग वो कर पाते हैं। मेरे Because ख्याल most से of the people who are writing are counting the syllables and just striking, trying to strike that rhyme and राइट, everything. Yeah, the meter and rhyme. But it's यस, not a game of meter and rhyme, because it could be pleasant to your ears when you go through that process, but it could not definitely touch that chord. एग्ज़ैक्टली। सो वो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि एक वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है वो मरने वाला, और मरने Hmm. से मतलब उनका बहुत कुछ और है। Hmm. मेटाफोर, इट्स अ रेटोरिक वे हुँ। ऑफ सेइंग वो एक समथिंग एल्स। आंतरिक वेदना है जो आप किसी भाव को शक्ल देने से पहले जिससे आप गुज़रते हैं, वो वेदना है जिसको कि वो पेन है। एंड ही और सेज उसके मरने के अलावा बाद भी करता हूँ मैं हर नज़्म। जी, उसके अलावा अबैंडन योर प्री-लव्ड notions and wisdom and knowledge, and the way you look at senses, for example, you have to हुँ, abandon that. So marne ko हुँ, usse bhi keh rahe hain ki how you can leave everything behind and start हुँ, with a mind that is a mind which is just newly born mind in a way.
So starting True. from nothingness, so you can, access everything. So nothing Hmm. is the only way to access everything. True. So वो True. नथिंगनेस की बात है। तो एनीवे विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, लोग किताब पढ़ लें खुद ही। वो सोचेंगे Right, यार। definitely, I would persuade people to go through this book, and it's a beautiful book. And we do means, as I told you, you have skimmed that cream for us, and सब जगहों से आपने जो चुन के निकाला है मोती, जहाँ जैसा कि मैंने कहा कि आप गोते खा के आई हैं गुलजारियत की जी। के सागर में, और हमारे लिए आपको मोती लेकर आई हैं, तो definitely I would ask my readers to go through this beautiful book. Shailja, let's talk about the sense of possession that we have for the art that we create. I could be a poet, I could be a painter, I could be a composer, a lyricist, a musician, any kind of art I might be pursuing. What kind of sense of possession do I have for it? Because when you are writing a book, when it is about to see the light of the day, you हुँ, feel like you have mothered a thing, and you keep wondering, you are apprehensive whether it would actually rock in your arms, or it would again be rocking in others' arms with the same fondness and affection. People would shower affection on it. Will it be able to live a day, a week, a month, or a year, or a decade, and endless? हुँ, So when it's there with me, and when I separate it from me, and I just leave it somewhere to depend on other people's perspectives and taste, likes and dislikes, how do हुँ, I feel? What kind of vulnerability do I have? Because I have that beautiful sense of possession for what I हुँ, have created. बिल्कुल। आई थिंक ये तो सभी राइटर्स के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। और आपने जैसे कहा कि जब तक वो हमारे पास था, हम उसको नर्चर कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे Hmm. हैं। Hmm. मुझे लगता है कि हाँ, उस वक़्त तक तो हमारी फुल एक मोरल, एथिकल, क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू आवर बेस्ट। बट वन्स इट इज़ इन द आर्म्स ऑफ अदर्स, मुझे लगता है फिर वो सेंस ऑफ पोजेशन वी हैव टू अबैंडन, बिकॉज़ देन इट बिकम्स more or less their baby. When I get, little notes and snippets from you and from others, on my, some of the pages on the book, I Hmm. feel that now it's totally yours, that you have possessed that part of the book because you have imbibed it, you have felt it, you have had your goosebumps, you've had your moments Hmm. of खुले लम्हे। Hmm. देन मेरा तो उसमें कुछ नहीं रहा, वो फिर आपका ही हो गया उस मोमेंट के बाद। अम, और जहाँ तक वल्नरेबिलिटीज़ की आपने बात की कि लोग उसको किस तरह से लेंगे, हाँ, Hmm. वो एक लगा तो रहता है डर, लेकिन मैं अभी किसी और से भी शेयर करी थी, किसी ने बहुत खूबसूरती से लिखा था, एंड आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, कि एज़ एन आर्टिस्ट अगर आपको कोई कमेंट नहीं कर रहा है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर आप आर्टिस्ट नहीं हैं। तो अगर कुछ आपको वल्नरेबिलिटी लग रही है कि ओ वेल, पीपल विल रिलेट टू इट और नॉट, विल दे लाइक इट, विल दे क्रिटिसाइज़ इट, लेकिन वो भी Hmm. आपकी आर्ट को अप्रिशिएट करने का ही एक तरीका होगा, जहाँ पे कि वो कह सकते हैं कि Hmm. आई डोंट एग्री विद दिस, यू नो कि सामने एंड वाले ने कुछ समय तो दिया आपकी कला को, तभी तो वो ये समझ पाया कि उसे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा. इट्स अ रिपल इफेक्ट, आई थिंक. इट्स रिपल इफेक्ट। और इसी तरह की बात होगी जैसे कि हम रिलीजन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है डाउट इज समटाइम्स मोर पावरफुल देन ब्लाइंड फेथ। सो उसी हिसाब से एक जो क्रिटिसिज्म है, जो वेल थॉट आउट क्रिटिसिज्म है, जो कि जहाँ पे कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है, दैट कैन बी हम्म. क्वाइट पावरफुल टू। ट्रू. सो वो मैं धीरे धीरे सीख के समझ के मुझे लगता है कि हम्म. हाँ, आई तो थिंक इस चीज से तो आप ही नहीं, गुलजार भी गुजरे हैं, जहां वो बोलते हैं कि मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठुरने लगता हूँ, कोना उठता है जब भी कहीं से, किसी मिसरे के अंदर झांक कर छूता है कोई, मेरे नंगे बदन पर कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से, बहुत सी चोटें तस्वीरों के अंदर ढांप रखी हैं. So I think he is also talking about the same vulnerability as an artist, as a creator, as a composer, as a writer, how people would relate to it, how people will fondle it, like it, or criticize it, cry बिल्कुल। it down or cry it up.
या एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, एक दुख दुखी तो हमेशा लगी रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। I wouldn't say कि मैं the moment it got published I was free of it. No, I wasn't. But I'm slowly, evolving to see, um, the post publishing journey Hmm. differently and in a more Hmm. enriching way. Hmm. So that's Again, been. just like a mother who nurtures the child up to a limit till where she can, and then she has to let it go out to the world and face the buffets of fortune or misfortune or whatever the way people or whatever life cooks up for him. That's And right. there has to be this attachment and there has to be that sense of detachment as well. होना ही अगेन पड़ता हमें भी मंझना है अगर एक कलाकार के तौर पे तो शायद हमें डिटैच भी होकर रहना ही पड़ेगा अपनी कला से. है। बिल्कुल बिल्कुल, yeah, beautifully said. शैलजा, आपको क्या लगता है कि अगर आप एक राइटर हैं, व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्ट इन योर हैंड, इज दिस द ओनली टाइम व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू सिट बाय योर डेस्क एंड राइट समथिंग, और इट शुड बी अ डेली हैबिट लाइक गुलजार सेज कि रोज दुकान पर बैठता हूँ. तो रोज दुकान पर बैठना क्यों जरूरी है? मुझे तो लगता है कोई भी किसी भी ग्रेट को उठा लो, ग्रेट राइटर्स को, आर्टिस्ट को, उन सभी में मैंने यही बात देखी, सुनी, झलकी इसी बात की हम्म. कि डिसिप्लिन तो चाहिए ही, बिकॉज creative flow, creative juices may not flow, but as a friend said, that you can still show up. Creativity may not show up, but you should still show up every day. Uh, I must admit that I wasn't so good with such discipline. लेकिन कुछ हद तक by not doing any other work but writing the book and hiring a hot desk, I did follow that discipline for good 2 years. And then उसके बाद मैंने फिर थोड़ा, जब काम 60-70% draft ready था, then I had bit of my work and other things and all that. But those 2 years was so pivotal to where this book is today, and that is all due to the discipline. And I think वो जो discipline है उसमें, जैसे किताब में भी एक रेफरेंस है किसी का कि एक तरह के आप मेडिटेटिव स्टेट में जब चले जाते हैं, मेरे ख्याल से उस मेडिटेटिव स्टेट से ही सारे क्रिएटिव झरनों का वहीं से ही शुरुआत हो सकती है। और अभी when I am sort of scattered between a number of things that I do in between, you know chats like this as well, book का भी चल रहा है और life के other things as well, we are so distracted, and I think there's never that moment of touching the deep nuclei of time, but also of your own thought process. वो moments बहुत rare होते जा रहे हैं, मुझे लगता है वो discipline ही है जो उन moments को और ज़्यादा लेकर बिल्कुल. आएगा। तो I'm sure you आई you थिंक the हाँ, answer रियाज बहुत जरूरी है. रियाज is करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने आप को मांझना है और कच्चा नहीं रखना है, पकना है कलाकार के तौर पे, तो ऑब्वियसली इट यू हैव टू गो थ्रू अ विगरस ट्रेनिंग. And also, I must just also quickly mention, as you said, he as a writer, and I always still sort of have this self doubt about whether I am a writer with one book. But yes, with that book, I turned You a are. 1 year old writer and a 2 year old writer and a 6 year old writer, and now I'm with the next book. I'll become a newly born writer again, because every book. Yeah, so beautifully said it. Yeah. Yes. So So it's not the number of books that qualify you as a writer, it's writing that does. exactly. You're always born with your new book and new creative Hmm. endeavor. So, hmm. Shelja, what does Gulzar say about death? There are poets from times immemorial who have talked about these universal themes of love, death, separation, relationships, mortality, immortality. So, what is Gulzar's take on death? Is it cynical? It's not cynical. I wouldn't say it's cynical, actually. He describes death as, that poetic promise to all. So that's one of the ways he describes death. मौत तू एक कविता है.
मिलेगी मुझको, वी ऑल नो दैट फ्रॉम द फिल्म आनंद। बट ये पूरी अपने आप में एक खूबसूरत नज्म है, तो वो इट्स अ पोएटिक प्रॉमिस। He refers to death as the most pious, the most beautiful, कि जहाँ पे कि कोई भी जिंदगी की सिलवट साथ नहीं जाएगी। So that those are the sort of the poetic metaphors that he is used। Hmm. लेकिन जो मैंने जैसे डेथ की चैप्टर की शुरुआत में वो हैदर का एक गाने का रेफरेंस दिया है कि अरे आओ ना के जा गई, मुझे लगता है कि दैट इज सच ए मास्टर स्ट्रोक व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग डेथ। एंड सो it's a dark, it's a sort of a noir, you know nazm, I can call it, जिसमें कि बहुत ही एक डार्क तरीके से उन्होंने डेथ का नेचर को डिस्क्राइब किया है। लेकिन इट्स सो रिलेटेबल एंड आई ऑलवेज फाइंड अ लॉट ऑफ कंसोलेशन डिस्पाइट the fact that it is a very very hard hitting nazm, but when you listen to it, nazm नहीं है वो, एक्चुअली फिल्म का गाना है। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको कंसोलेशन भी मिलता है। लेकिन जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा, और उस चैप्टर का नाम भी मैंने वही रखा है कि मौत मुनसिफ है। तो Hmm. वहां पे ही टाइज इट ऑल बैक विद हाउ ही व्यूज लाइफ। तो Hmm. बिफोर वी Hmm. कैन टॉक अबाउट डेथ, वी हैव टू टॉक अबाउट द लाइफ Hmm. दैट यू नो precedes that। एंड अगेन वो काल अगर गर्दन पे बैठा है, तोड़ रहा है हमें टुकड़ों में, और हमने उनको काल को पल-पले लम्हों में तोड़कर जीना सीख लिया, तो फिर डेथ का कोई डर या कुछ फ़ियर हाँ, आपके साथ बिल्कुल। नहीं जा सकता। तो Hmm. ज़िंदा रहते-रहते मर ना जाएँ, इसकी उन्होंने इसके बारे में भी कई बातें लिखी, और मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं कि आप जब ज़िंदा हैं तो फुल्ली ज़िंदा कैसे हैं? उसके फिज़ियोलॉजिकल से लेके फिलोसॉफ़िकल सिम्पटम्स क्या हैं? और मरने से पहले ना मरें, और ज़िंदा Hmm. रहते हुए ज़िंदा कैसे रहें? मेरे ख़्याल से वो सबसे बिल्कुल। खूबसूरत और प्यारा कंट्रीब्यूशन है उनके नेचर ऑफ़ डेथ के बारे में, जो उनके मेडिटेशंस हैं। जैसे कि कबीर भी बोलते हैं कि चाकी चलती देखी के दिया कबीरा रोए, दो पट भीतर आई के सालिम बचा न कोय। कि काल की चक्की चलते हुए देखकर कबीर रोने लगते हैं, क्योंकि आकाश और धरती के दो पाटों के बीच कोई भी सुरक्षित कहाँ रह पाया है। So nobody can actually escape death. So rather than lamenting over the mortality of human life, we should glorify the things that we do, and we should make life more meaningful. Like हुँ। गुलजार asked, उनका जो ये सवाल है कि सब पर जिंदगी क्यों नहीं आती, अपने आप में कितनी कितनी मेटाफिजिकल है। इट हैज लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग, दैट piling day on day is not what life is all about. You have एब्सोल्युटली। to be actually living. लिविंग, और उस लिविंग के ही क्या क्या सिम्पटम्स हैं या क्या Hmm. उसकी साइंस हैं। उस पे Hmm. भी 2-3 नज़्में हैं। अ, मेरा थॉट प्रोसेस चला गया। हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि आपने कहा कि हाँ, इस तरह से जीना है, तो कई बार लगता है कि हाँ, इट्स अ प्लैटिट्यूड, कि हाँ, सही है, बात तो सही है कि हमें मौत के बारे में क्या डरना है, वी शुड जस्ट लिव फुल्ली। लेकिन the mundaneness of life and the the hardships of life, और जिंदगी जो just takes over sometimes in its sort of uh, not so grand forms, वो भी Hmm. होता ही है, वो भी जिंदगी है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि इसीलिए हमें हर मे बी हर 3 महीने कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना, ऐसा करना, ऐसा कर गुजरना ज़रूरी है, और वो ही मेरे ख्याल से ट्रूली ज़िंदगी जीने के मोमेंट्स पैदा कर सकते हैं। सो ये किताब लिखने के पीछे भी कारण यही था कि वो रिमाइंडर्स सर्व होते रहें, जो कि हम मेरे ख्याल से अभी 2 घंटे में फिर से भूल जाएँगे इस कन्वर्सेशन के बाद, कि हमको पिछले। Otherwise, it would be so monotonous. Yeah, if we don't remember these lessons, if these reminders don't keep serving us to actually live life in the moments that we have got, then otherwise, Gulzar would suggest the people to, he says, Ama seene ki wo khalish gayi,
बेकरारियां गई, बीमारियां गई, सो भी जाओ, सब्र ले लो, कब्र ले लो. दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, हैदर की जो है. और oh, it's so relatable. I think a lot of us would have seen, relatives or parents, pass away. And there's so many aspects of them that we always worry about. Unki health ka, bimariyon ka, bekarariyon ka. But with death, बिल्कुल. it takes everything with it, या. and या. there's a consolation in that very hard hitting song. It's like so direct, it's like truth, but it consoles you as well, and that is an amazing feat again that is achieved with that song. It's one of my most favorite. Which song are you talking about? Can we have a few lines of it? अरे आओ ना के जहाँ गई, आई कांट सिंग दैट, वो उसी की लाइन Okay. है जो आपने पढ़ी ना. Hmm. इट्स फ्रॉम द Hmm. फिल्म हैदर. Hmm. बट हाँ, अगर किसी को ढूँढना है तो अरे आओ ना के जहाँ गई, जहाँ गया सो जाओ. दैट्स द सॉन्ग, व्हिच इज़ आई थिंक द क्लाइमेक्स ऑफ दैट फिल्म. So, Shailja, it's been a beautiful discussion with you on various aspects and themes of Gulzar's poetry. And I feel enriched having had a word with you about this mutual love of ours. Yeah. And let's finish this discussion on this positive note कि लाइफ हम सब पर टूट के बरसे, हमें जीना आए. ये छोटी छोटी जो एनवीज हैं या जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, if we if we withstand all these seasonal changes or the adverse times, then definitely life is there with open arms to all of us. No, beautifully said. And I think as we said before, we need these reminders. And with time, we Hmm. get better as well. With time, I think our own system starts to then remind us of those things. So the Yeah, more and I think we there are do, many people who keep saying कि समय नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता. तो हाँ, प्लीज टाइम निकालिए उन सारी खूबसूरत चीजों के लिए जो कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड करा सकें कि why are you there on earth? What could yeah, be the bigger picture? So rather yeah. than getting involved in that little canvas, emerge out of it and But be the expand your champions. horizons, because I think that's our only prerogative is कि हम पल-पल बदलते रहेंगे. और उस Hmm. पल-पल बदलने की प्रोसेस में अगर हमारे साथ, लिटरेरी जायंट्स हों या आर्ट हो या जो भी आपका क्रिएटिव या जो भी आपकी कॉलिंग है, वो रहे तो वो पल-पल बदलना मेरे ख्याल से बहुत ही Hmm. एनरिचिंग होगा. कोई क्योंकि being ओवरऑल human, we should not be fixed up in a certain mold. बिल्कुल, We have to flow out of that mold. कतरा-कतरा. Yeah, katra लेकिन katra and take new shape every day. बहते रहना है. बिल्कुल. Oh, it was a beautiful conversation. I really, really enjoyed talking to you, Maya. It was Same really here. well Thank you curated. so much, Shailja. Thank you Thank so you. much. Thank you. We'll speak again. Have a great day ahead. Bye. Goodbye.